So what we are going to study is about options. Everything we need to know about options. How does the options works? कैसे काम करता है options क्या है कैसे ट्रेडिंग होती है सारी चीजें आज पढ़ेंगे. Okay. So I'll be covering both Hindi and English. I'll be repeating once in Hindi. And English. Okay. And no matter how many times I request, do not irritate by drawing all these things. The session will be long, like maybe of approximately 2 hours. That's what it has been planned. All right. So basically, the option is the derivatives. Okay. So if you remember, I told you derivatives are of two types. Derivatives दो तरीके के होते हैं. One is futures, and other one is options. We have studied enough about options. See, I'm not going much into the technicals, how these options are formed and how does it. I'll be telling you the things which is important for you to know, and based on that, you will be able to trade. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ऑप्शंस कैसे बनता है कैसे इसका सारी चीजें क्या होती हैं, वो चीजें बताऊंगा जो आपको जरूरत की है, जिससे जिससे आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प होगी. ओके, द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम. ठीक है, ऑप्शंस का भी सेम डेफिनेशन रहेगा. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बायर्स एंड सेलर्स विल कम. Where buyers and sellers will come. Options क्या है? Contract है जहां पे buyers और sellers आते हैं. Third thing is it will be also having duration, which means validity. Then इसकी भी expiry होगी. It will be also having expiry. Okay, so option is a contract where buyers and sellers will be meeting, like they'll be getting into an agreement and which will be having some kind of duration and there will be a expiry date as well. एक contract है जहां पे buyers sellers मिलेंगे जो एक duration तक रहता है ना, इसकी भी एक expiry होती है. ठीक है. Now there are two types of options. First one is stock options. First one is the stock options. Second one which we have is index options. Recently there are two more index which has been added. I will be covering like Nifty and Bank Nifty के बारे में बताऊंगा. Expiry date जो है इस दोनों चीजों के लिए रहेगा. There are Fin Nifty and Mid Cap Nifty. ठीक है, ये भी है. ये इसमें in these we do not have much volume. We are having a huge volume in this one only. Stock options will work in the same way. Basically, the options value will be derived from its underlying assets. ठीक है, options की जो भी value होगी उसकी underlying assets से derive होगी. मतलब क्या है? अगर Reliance है, ठीक है, and Reliance का option जो है, okay, the option value will be deriving from Reliance. ठीक है, Reliance अप जाएगा तो ये option value में भी changes आएंगे. ठीक है, so whatever the options contract, like stock options contract we are having it, those will be following its underlying assets. ठीक है, index options we are having Nifty 50 and Bank Nifty. Let's consider the one which we are having the majority of the volume. ठीक है, here the Bank Nifty and Nifty 50 movement, okay, will help its options to give us the move. Nifty 50 में movement आएगा तो Nifty 50 के options में movement आएगा. Bank Nifty में movement आएगा तो Bank Nifty के options में movement आएगा. ठीक है,
The two types of options which we have, stock options and index options, they are having expiry date. ठीक है, उनका कुछ expiry date होते हैं. So stock options जो हैं, उनका expiry, it is only monthly expiry. Okay, it is only going to be monthly expiry, which means last Thursday of every month along with the futures it will be getting expired. ठीक है, लास्ट थर्सडे का जो भी हमारा मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उस दिन ये स्टॉक ऑप्शंस भी एक्सपायर होंगे, जिस दिन आपका जो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर्स होते हैं, उस रिलायंस का फ्यूचर्स है तो रिलायंस के फ्यूचर्स के साथ ही साथ रिलायंस का ऑप्शंस भी एक्सपायर होगा. Along with the Reliance future, let's say talking about the Reliance, if the Reliance future is expiring on the same day, the Reliance options will be also expiring. Then we have index options here. I'm again telling you, I'm considering Nifty 50 and Bank Nifty. Okay, so I'll be talking about like considering the Bank Nifty itself. Those who do not know what is Bank Nifty like is an index which considers the top 13 banking sector stocks. Okay, 13 or 12, I just need to cross check once. Index options will be also having monthly expiry. इसका भी monthly expiry होगा, but इसका weekly expiry भी होगा. Okay, weekly expiry भी होगा. I'll tell you how. So monthly expiry, like in 1 week, like sorry, in 1 month, how many weeks are there? 4 weeks, right? एक महीने में कितने weeks होते हैं? 4 weeks होंगे. पहला, दूसरा, तीसरा. First 3 weeks will be weekly expiry. ठीक है, first 3 weeks will be weekly expiry. Then the last one will be your monthly expiry. ठीक है, जो भी month का last Thursday होगा, that is going to be your monthly expiry. So for example, you can see that here we have 3rd November, which is weekly expiry, 10th November, which is weekly expiry, 17th November, which is weekly expiry. Then we have monthly expiry. Okay, so index options will be having monthly and weekly expiry, and stock options will be having only monthly expiry, which you can see that a November expiry. So what is the CP? Will come to that. Is this clear till this point of time? यहाँ तक clear है सबको? ज़्यादा cover किया नहीं है तो clear होना चाहिए वैसे. Okay. Language issue I'm covering in the both the language, so there is no issue, right? कोई issue नहीं आ रही है ना? मैं दोनों language में बोल रहा हूँ. उदय राजपूत यार वही बात हो जा रही है, आपको बता गया है कि कैसे करना है, बट फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो. समझो, जब खुद जानते हो कि अब कैसे करना है, फिर मेरे पे क्यों? अब देखो सेकेंड डे का क्या है उसका सब्सक्रिप्शन. एट द एंड आई विल चेक इट आउट. ओके ओके, just one request is that keep at least like do not ask unnecessary questions. I'm not well, like abhi like 1 hour back I was having pretty bad headache and I was not in the like situation to take up the class. I had applied a lot of Navratan Tel, took a hair wash of with cold water, like then I'm feeling better to take up the class. I didn't wanted to miss this day. Okay, then now that this options which I spoke about, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है, ये तो मतलब कि बेस्ड ऑन कैटेगरी, लाइक इक्विटी का ऑप्शंस हो गया, देन डेरिवेटिव का सॉरी इक्विटी का ऑप्शंस हो गया, देन इंडेक्स का ऑप्शंस हो गया, ऐसा है. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस स्पेसिफिकली डिजाइंड, which is your call options and put options. Please listen to me very carefully. It is going to be very interesting. ठीक है, पहला है आपका कॉल ऑप्शंस, दूसरा है आपका पुट ऑप्शंस. ठीक है, नाउ जस्ट कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ कॉल ऑप्शंस, लाइक कॉल ऑप्शंस को हम लोग सीई बोलते हैं, वी कॉल कॉल ऑप्शन एज सीई एंड पुट ऑप्शन एज पी. The movement of call options and put option is completely dependent on its underlying assets. इन दोनों का मूवमेंट जो है वो completely dependent है उसके underlying assets पे, and they will be doing exactly opposite of each other.
ठीक है, ये लोग एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आई विल बी कंसीडरिंग बैंक निफ्टी एज द बेस टू मेक यू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चल लो, लेट्स अंडरस्टैंड अंडरलाइंग एसेट्स, वी आर हैविंग बैंक निफ्टी, ठीक है। Then we have call options, then we have put options, ठीक है। Now if bank nifty goes up, the call option will also go up. So basically bank nifty call options will follow the movement of bank nifty, ठीक है। Let's consider a parent has two children, one is like very idle and he will be listening to his parents, other one will be exactly doing opposite of whatever he says, which means if bank nifty is going upside, the put option will be coming downside, okay. And if bank nifty goes downside, the call option will also go down and put option will be going upside. Simple thing क्या है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा कॉल ऑप्शंस भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन पुट ऑप्शन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो कॉल ऑप्शंस भी नीचे आता है एंड पुट ऑप्शंस हमारा ऊपर जाता है, ठीक है। सो इफ बैंक निफ्टी इज गोइंग अपसाइड, कॉल ऑप्शन विल आल्सो गो अप एंड पुट ऑप्शंस विल कम डाउनसाइड, ओके। Other thing is, if bank nifty is coming downside, basically underlying asset is coming downside, the call option will also come down, but the put option will be happy. Put option is like that person who gets happy when something bad thing happens to you. जिस put option ऐसा है कि जिसको बहुत खुशी मिलती है जब आपके साथ बुरा होता है, प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं तो इसकी खुशी का ग्राफ ऊपर जाएगा, it will be, if the prices are falling, put options value will be increasing, okay. If if the prices are falling, let's say the call option, let's say, which is your best friend, that person will be also feeling bad and it will be going downside. So simple sa hai, if underlying asset goes up, ठीक है, call option also goes up, ठीक है, and put option comes down, which means if underlying asset goes down, call option will also come downside and put option will go up. Put option is like Salman Khan, who will be happy. You know what it is going to come next. Put option will come upside, okay? Will go upside. Please take a screenshot or write down this point, okay? Okay, understood? Like how does the C and P will move? Understood everyone? How will your P and call options and put option will be moving? I guess there is no need to repeat anything because it काफी बार कर चुका हूँ repeat, right? Okay, good. Now my questions will be coming, ठीक है? When you sell something, what do you want? What do you want with the prices? To go down or to go up? क्या चाहते हो आप जब आप कुछ बेचते हो तो आप क्या चाहते हो? up भाई कैसे? How like people are saying still up? When you sell something, what do you want? To be in profit? To go downside, right? And when you buy something, you want the prices to go up, okay? Right? Chalo. Let's assume that according to my analysis, let's go to the chart. Stay till the end. There are, I know, 400 plus people. By the time I'll end this session, there'll be around 250 plus. Okay, the session will be that long, but I'm going very slow so that you can understand each and every part. Okay. And I cannot take this session in parts because today is the important day, like it is expiry. So you will understand key what is the most important thing.
आपको समझ में आएगा, एक्सपायरी की वजह से मैंने आज लेना ज्यादा बेटर समझा। ठीक है, चलो। Assuming, let's assume I had an entry at this point of time. चलो यहां पे मेरी एक एंट्री बनी, ठीक है। ये सही है, गलत एंट्री के लिए नहीं है, बस हमने एंट्री बनी हमारी यहाँ पे। We kept a target up to here. My entry is around 41,100. My target is around 41,383. ठीक है। Now tell me, okay, I'm repeating the question. I'm entering at 41,100. My target is 41,383. Now tell me, which option should I sell? कौन सा ऑप्शन मैं बेचूंगा? पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैं बेचूंगा? विच ऑप्शन विल आई सेल? लाइक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। How come? If Bank Nifty is going upside, call option will be going up, but put option will be coming downside. Okay, please listen to me now. If Bank Nifty is going upside, call option value will be going up. If I am selling call option, let's say, what will be happening? I will be losing money. Let's say if I have sold at 400 rupees, if it goes up, I'm losing money. But if I am selling put option, it will be coming downside, right? क्योंकि if market goes up, put option comes down. अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को नुकसान होगा, लेकिन पुट ऑप्शन क्या है, वो नीचे आएगा। तो मुझे क्या बेचना चाहिए? पुट ऑप्शन, राइट? अगर if market is going upside, I should sell put options. Understood everyone? कि why? Understood everyone now? And if I had to buy, which options I would have purchased? अगर मुझे बाई करना होता तो मैं कौन सा ऑप्शन यहां पे परचेस करता? Call option. See, try to use your brain. Okay, please listen to this. Just now what I had told you, okay, you told that you understood this point, right? तो मैंने क्या बोला? If market goes like that point of time, market was going upside, ठीक है, ये सिचुएशन थी। I asked you what we can sell, हम लोग क्या बेच सकते हैं? तो अगर if I am selling something, the value should be coming downside ना, P should come down. P, अगर मैं कुछ बेच रहा हूं तो किसकी वैल्यू नीचे आएगी? P की। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे क्या बेचना चाहिए? सॉरी, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे क्या खरीदना चाहिए? यहां पे देखो आप, इफ मार्केट इज कमिंग डाउन साइड, व्हाट आई शुड बाय? सी और पी? सी और पी? अभी भी सी ही बोल रहे लोग। Everything is written in front of you, but still like some people are saying C. It's P, right? हम लोग put options खरीदेंगे. So one thing over here is that if underlying asset is going upside, ठीक है, अगर underlying assets हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, then buy call option or you can sell put options as well. Put options as well. In both the ways we can make profit. Which one is profitable? I'll talk about it. If underlying asset is going downside, then buy put option or you can sell
call options as well. When we are selling options, we basically want the prices of that options to come down, to decrease. ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या खरीदना है, क्या बेचना है? If market is going upside, what do we have to buy, what do we have to sell? Is it clear now? It is written right in front of you. सर आपका सेल गिरने का पी है, जब गिर रहा है मार्केट तो आप पी खरीद सकते हो, ठीक है? चलो, लेट्स अज्यूम दैट, कंसीडर करते हैं वी हैड अ परफेक्ट एंट्री, यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो मैंने यहां पे एक ट्रेड ले लिया। अब आप बताओ, I have the option to either do anything, like I can trade in C, I can trade in P, but I decided to sell options. मैंने यहां पे डिसाइड किया कि मार्केट नीचे गिर रहा है, मेरे को ऑप्शन बेचने का है। कौन सा ऑप्शन मैं बेचूंगा बताओ? कौन सा ऑप्शन बेचूंगा मैं? कॉल ऑप्शन बेचूंगा ना, जिन्होंने बोला अभी पी, जो एक बंदा बोला था। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। नाउ ऑप्शंस के जो प्राइसेस होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के जो प्राइसेस होते हैं उनको हम लोग ऑप्शन प्रीमियम भी बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम भी बोलते हैं। अब why do we call this as option premium and how the options are priced? Generally options will be pricing from like 10 rupees to like 10,000 rupees as well, ठीक है? वो कौन सा ऑप्शन, like which options we have to buy, we will understand. So how does the options are priced? Nobody knows, ठीक है? एक मेथड से कैलकुलेट होता है, but nobody knows that कि exactly at this point of time what will be the prices of any kind of options. किसी को नहीं मालूम होता है वो, ठीक है? First thing is that. So you will be always like, sometimes you'll be hearing from me कि option premium कम हो रहा है, तो which means कि option prices are decreasing. Option prices, option premium both are same thing, ठीक है? Now these option premium, ठीक है, ये जो options के prices होते हैं या फिर premium बोल लो, ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती हैं। Let's understand that thing. Okay. So when I am, you can see that कि now you understood, like ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। C you understood, and let's say Reliance I am going for 2500, ठीक है? C you understood, what is C? You P understood, this is November month expiry, you understood, but what is this 2500? What is this 2500? ठीक है, let's understand that part. It's not that complicated, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। ये 2500 क्या है, सीपी तो समझ में आ गया 2500 क्या है। This 2500 is basically our strike price, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? What is the definition of a strike price? I don't care, मुझे नहीं मालूम है, मेरे को जानना भी नहीं है। What is the work of a strike price? Let's understand. See, when we exercise or when we basically trade or buy any call options or put options, ठीक है, जब हम लोग कोई भी put options और call options खरीदते हैं, ठीक है, तो एक हम लोग प्राइस चूज करते हैं, ठीक है, कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं खरीदूंगा। स्ट्राइक प्राइस कैन बी टर्म्ड एज अ टारगेट प्राइस एज वेल, ठीक है, कैन बी टर्म्ड एज टारगेटेड प्राइस एज वेल। स्ट्राइक प्राइस को हम लोग टर्म कर सकते हैं टारगेट, मैं जनरली इस तरीके से ही समझाता हूं, दैट इट इज आवर टारगेट प्राइस। लेट्स से दैट फॉर एन एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ सेल्स कंपनी, ठीक है, यू विल बी गेटिंग योर बोनस इफ यू अचीव 1 लाख सेल्स। अगर आप 1 लाख रुपए का सेल्स अचीव करते हो तब आपको बोनस मिलेगा।
What if you reach to 90,000 rupees? अगर आप 90,000 rupees तक पहुंचते हो सेल्स का, तो will you get the bonus? No, you won't be getting. Simple, reach 1 lakh and get the bonus. Nothing lesser than that. Okay, 1 लाख से कम है, नहीं मिलेगा बोनस. ठीक है. Strike price is the price through like at which we decide that ki whether we have to buy this call options or put options. Based on this strike price, we have 3 types of options. ठीक है. इन स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे हमारा 3 ऑप्शंस को जो कैटेगरी है वो डिसाइड किया गया. ठीक है. Which is in the money, which is often called as ITM. ठीक है. देन होता है हमारा आउट ऑफ द मनी, जिसको हम लोग OTM बोलते हैं. एक होता है हमारा एट द मनी, जिसको ATM. एट द मनी इज नथिंग बट आवर इन द मनी. ठीक है. तो मैं अभी 2 ऑप्शंस लेके समझाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना. जस्ट वांट टू क्लियर हैव अ क्लैरिटी दैट कि एवरीवन इज कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेज, राइट? नो वन इज हैविंग एन इशू. किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? चलो ठीक है. चलो, so in the money, let's say I'll explain in a simpler terms what is your in the money. ठीक है, you will understand, do not worry. आधा घंटा हुआ है, 12 लोग चले गए हैं. In the money is something which you have already achieved. ठीक है. In the money is that thing which you have already achieved it. ठीक है. In the money कैसा है कि वैसा प्राइस जो ऑलरेडी आपने अचीव कर चुका है. And out of the money is your targeted one. Out of the money is the target price. ठीक है. ये मेरा ड्रीम है, टारगेट है, which means that कि let's go on a scale. Okay, here we have, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Let's say a kid who is in 8th class. Okay, अगर वो 8th क्लास में है तो ये 9th 10th 11th 12th उसके लिए क्या हो जाएगा? 9th 10th and 11th 12th, what will be for him? It is going to be in the money or out of the money? It is going to be out of the money, basically his target. What he has already achieved is going to be in the money. ठीक है, समझना इस बात को. What he has already achieved is going to be in the money. Okay, simple thing. In the money is basically, in simpler words, in the money which has been already been achieved. The target, like जो भी हमारा था वो achieve हो चुका है. Out of the money is yet to be achieved. Out of the money is yet to be achieved. Clear till this point of time? The simple meaning of in the money and out of the money. किसी को कोई डाउट है तो बता दो. अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो let me know before I move ahead. If it is clear, please type yes. If you have doubt, please type doubt and let me know what's the doubt. सबको clear है? All right, cool. Basic difference between equity market and options. Equity market is basically where we trade based on the like stock prices. ठीक है, जहां हम where we are trading on the company's stock price. Okay, but options, that's a part of the company, like that's a part of the company's stocks. Okay, and the movement of options are completely based on the company stocks movement. ठीक है, and this particular derivative has been introduced to make sure that the liquidity is increasing. जो participants है जो और opportunity दे सकते हैं trading करने के लिए, इसलिए इसको introduce किया गया है. Okay, सर ये busy कैसा करना है? सर ये buy कैसे करना है? बताएंगे कैसे बात करना है. अब चलो समझते हैं. आप let's understand in a way. Let's talk about call options. What does the call options want? Call options क्या चाहता है? Bank Nifty prices to go up or downside, or basically any underlying asset prices to go upside or downside. क्या चाहेगा? When will the value of call option will go up? When the prices will be going upside. Bank Nifty. First, please remember this point of time. Okay, cool. ठीक है.
Put options, what will the put option want? Put options क्या चाहेगा? Prices to go downside. सर आप क्या प्रेफर करते हो? मोस्टली एटीएम, आईटीएम? इट डिपेंड्स, आई जनरली गो फॉर आईटीएम. ओके, ठीक है, चलो. नाउ लिसन टू मी. Let's say the underlying bank nifty price is at 40,000 rupees. ठीक है, we will be considering here the strike price thing. यहाँ पे हम लोग strike price समझते हैं. ठीक है, strike price एक ऐसा contract price है जो एक multiples में होता है. देखो मैं आपको समझाता हूँ. जब मैंने रिलायंस टाइप किया, when I type the Reliance, you can see that कि 1920, 1940, 1960, 18, all these are strike price. So here the strike price is in multiples of 20. ये क्या है? strike price जो है आपका multiples है 20 का. तो इस strike price के basis पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं कि कौन सा, अगर मैं यहाँ पे let's say if I'm adding all the strike price which we have, ठीक है, यहाँ पे सारे मैं strike price ऐड कर लेता हूँ जो भी यहाँ पे अभी तक घुसे हैं. Let's say Reliance, अब देखो कि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है बिकॉज ऑफ दैट. लेट्स इफ आई गो फॉर रिलायंस, लेट मी रिमूव एवरीथिंग. Okay, so Nifty 50, this is the strike price. In the middle of it, which you are seeing it, this is your strike price. Okay, I'm going very slow so that you can understand everything. Okay, so what you can see in Nifty 50, that these are multiples, so like 15,650, then 15,700, these are the multiples of 50. ठीक है, तो ये जो strike price होते हैं वो multiples में होते हैं. Like somewhere it is for some stock it is going to be 20 multiples, some stocks it is 10, some stocks it is 5, for some stock it is going to be 100. बैंक निफ्टी में ये multiples में जो available होते हैं वो 100 में available होते हैं. ठीक है, which means 40,000, 40,100, then 40,200, 300, like this it is going to be available. ठीक है, तो strike price will be available in the multiples of 100, 20, 50. For Bank Nifty ये 100 में available है. Let's assume Bank Nifty is at 41,100. Let's say 41,100. ठीक है, listen to me and please and let's say for call option, okay, what do you think the target achieved will be? आपको क्या लगता है कॉल ऑप्शंस के लिए टारगेट अचीव्ड क्या होगा? अचीव्ड, अगर मैं लेवल्स, रुक जाओ आप लोग, रुको. I'll make it pretty easy for you. 41,500. And so on. ठीक है, now let's say that Bank Nifty is at 41,100 and I want to know for call option which is in the money, which are the prices like basically achieved. If you can remember, मैंने अभी क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 40,000 रुपीज पे है तो इसने क्या ऑलरेडी कवर कर चुका है. Like if you can relate and tell it to me for call options, what is in the money, like this side. नीचे की तरफ होगा. What does the bank nifty, what does the call options wants? The value of call options will be increasing. The value of call options will be increasing when it is going to go upside. So bank nifty is at 41,100.
द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज 41,100। ठीक है, अब इस कॉल ऑप्शंस के लिए टारगेट क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट, विच मींस 41,200, 41,300, 400, 500। तो 41,100, 200, 300, 400, 500 ये क्या हो गया, ये इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है? आउट ऑफ द मनी है, ओके, ठीक है। नाउ if you can recall, do not worry, I'll make you understand, like before I end the session you will understand, do not worry on that. Yeah, before now let's imagine like bank nifty is at 41,100. For put options, for put option, what will be the target price? कौन सा टारगेट प्राइस होगा पुट ऑप्शंस के लिए? टारगेट प्राइस होगा 41,000 और 41,300। टारगेट एज इन की ओटीएम कौन सा होगा इसके लिए, 41,000 या फिर 41,300? हाउ कम ऋषि 41,300? ये तो ऑलरेडी अचीव कर चुका है ना। ओके, कैन यू प्लीज लेट मी नो, कैन यू प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि कॉल ऑप्शंस का इन द मनी कौन सा होगा? कॉल ऑप्शंस का बेसिकली इन द मनी वट एवर द बैंक निफ्टी और अंडरलाइंग एसेट प्राइस है उसके नीचे सारा कॉल ऑप्शन का इन द मनी हो जाएगा एंड अबव आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। एंड पुट ऑप्शंस के लिए ये इन द मनी हो जाएगा एंड ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन? जस्ट लेट मी नो. I want to go with the poll, so just allow me a minute to create this poll so that I'll have a better answer, because I'll be explaining more in details, by the way. It's not the end. ये end नहीं हुआ है भाई, ठीक है? अभी एक बड़ा simple से example से समझाऊंगा, you will understand. Okay, so no worries on that. If you're thinking that you have not understood this point of time, I'll make sure that you will be telling me कि you have understood. I just want to know कि हाँ किसका मतलब दिमाग इतना शातिर हो गया कि उनको जिसको समझ में आ गया, just type yes. If you have understood, type yes. Only 64% of people have voted. Chalo, it's like 80% people have understood. ठीक है, चलो, no worries. I'll give you a very simple example. With that help, you will be understanding. Let's अब देखो, लेट्स से मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाने दो। Okay. So put options, obviously the aim is to go over here and call option as aim to go over here and put option as aim to come till here. Okay, let's assume 41,100, 200, 300, 400, then 40,000, 41,000, 40,900, 800, 700. Let's say call option is over here. ठीक है, कॉल ऑप्शन जो है हमारा ये यहां पे है। अब आप जस्ट इमेजिन इन योर ब्रेन यू आर वॉकिंग ऑन स्टेयर्स। आप ये पहला स्टेयर्स गया, दूसरा गया, तीसरा गया, फोर्थ गया, विच मीन्स ऑल दिस विच यू हैव कवर्ड। ठीक है, ये सारा तो आपने कवर कर लिया। जैसे कि अगर आप मान के चलो इस पॉइंट, इफ यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, विच मीन्स कि ये तो सारा कवर हो गया आपका ना। The one which you have already achieved is going to be call option. अब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है? अब मैं ये देख रहा हूं, अभी इधर मैं इधर हूं तो 41,200, 300, 400 क्या है हमारे लिए? मेरे को ऊपर चढ़ने का है। I have to walk towards upside to 41,200, 300, 400. So what is going to be that? It is going to be out of the money. ठीक है, ये मेरा call options है, ठीक है, where I want to walk towards upside. So till the time wherever I am, like till the time whichever the stairs I am, and the stairs like before that I have already walked out.
ठीक है, मैंने ऑलरेडी उस पर चल चुका हूं, निकल चुका हूं उधर से, तो ये सारा मेरा इन द मनी हो गया, एंड जो मुझे अभी चढ़ना है वो मेरा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा फॉर कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक अंडरस्टूड कॉल ऑप्शंस का? किसी को भी डाउट है कॉल ऑप्शंस में, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप यस। चलो ग्रेट। now abhi the same stair is there. Now you are walking towards us. Now your crush is coming towards downside, जो आपके लेवल से आगे है भाई। ठीक है, your crush is coming towards downside। ठीक है, you guys are on the same note, same level। ठीक है, अभी सेम लेवल पे है। अब क्या है, your crush wants to go downside, okay, and if she is coming from top of, like वो ऊपर से आ रही है मान के चल लो, तो which means that she has already like above this whatever it is, ये किधर भी ऊपर जितना भी है, ठीक है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट? सो इफ यू कैन सी दैट कि फॉर यू, फॉर कॉल ऑप्शन OTM इज इक्वल टू पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शंस का क्या हो जाएगा, कॉल ऑप्शंस का OTM पुट ऑप्शंस का क्या हो जाएगा, in the money। her goal is to go towards downside, the put option goal is to go towards downside, which means ये क्या है हमारा P के लिए, what is the for P, what is it, it is OTM। for P what is it, it is OTM। so put option OTM is equal to call option ITM। समझ में आ गया? सिंपल। एवरीवन अंडरस्टूड दैट कि कॉल ऑप्शंस OTM इज इक्वल टू पुट ऑप्शंस का इन द मनी, एंड पुट ऑप्शंस OTM इज इक्वल टू कॉल ऑप्शंस का इन द मनी। एवरीवन अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो। अगर आपको डाउट है, दिक्कत हो रही है तो बताओ। ठीक है, अब यहां पे, ठीक है, इस एग्जांपल से आई गेस एवरीवन शुड बी क्लियर, लाइक एनीवन शुड बी। अब यहां पे अगर आप, जिनको समझ में नहीं आया, आई विल बी टीचिंग अबाउट दिस थिंग इन नेक्स्ट क्लास, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू अबाउट दिस। ठीक है, तो यहां पे आपका ना, यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे let's say at 18, like here you are seeing, you can see call options, you can see put options, right? जो call options का strike price है, okay, it is like the shaded area is in the money। ये जो yellow वाला area दिख रहा है ये आपका in the money है, and ये white वाला out of the money। I'll be explaining this in next class by the way। so if you can see this, the shaded area is equal to like calls का in the money, puts का out of the money है। जो भी कॉल साइड का, लाइक जो भी कॉल साइड का ये व्हाइट एरिया इज आउट ऑफ द मनी, एंड पुट साइड का ये आपका सेम चीज ये इन द मनी होगा। ठीक है, तो कीपिंग इट इन द वर्ड्स, लेट्स से सिंपल से वर्ड्स में डाल के आपको बता देता हूं मैं। आई जस्ट राइट इट एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश टू। ठीक है, एंड यहां पे हमारा इस साइड हो गया कॉल्स, ठीक है, इस साइड हो गया हमारा पुट। ठीक है, नाउ दिस वन for calls it is going to be OTM and it is going to be in the money, and for put it is going to be in the money, and for calls, oh sorry, for put it is going to be out of the money। ठीक है, so in simpler words
call option OTM is equal to put options in the money, and call option in the money is equal to put options out of the money. ठीक है, ये हमारा सिंपल सा है. If you have any doubt, please do let me know. अगर डाउट है तो बता दो before I move ahead to the next step. ठीक है. Yes, Preeti, let me know what's the doubt. Okay. सर आईटीएम ओटीएम से क्या होता है मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ अभी. गुड. अब नाउ वी नो दैट कि देयर आर सो मेनी स्ट्राइक प्राइस, सो व्हिच वन वी शुड बाय. हमें हमेशा कौन सा खरीदना होता है उसके बारे में समझते हैं. वी शुड लाइक इफ वी आर बाइंग वी शुड ऑलवेज गो फॉर इन द मनी. ठीक है, एंड दैट टू नियरेस्ट इन द मनी. And the nearest in the money is called as at the money. मतलब if bank nifty is at 41,150 let's say, so 41,100 जो हो जाएगा, जो एक मीडियम जो प्राइस निकलता है ना, that is your at the money. ठीक है, that is your at the money. ठीक है, so we always have to go for in the money and that too nearest in the money. If strike price, if the let's say stock price or strike bank nifty is at 42,150, just below that 42,100 we should be going for it. If bank nifty is at 39,400 and if I have to buy put options, I should be going for 39,400 or 39,500. If bank nifty is at 36,570, मेरे को put option खरीदने का है, I should be going for 36,600 P. We should always buy the nearest in the money. Okay, हमेशा हमें nearest in the money चाहिए होता है. अब उसके पीछे का Greeks, ठीक है, the reason behind that is the Greeks which we are not covering over here, but आपको logic बताता हूं क्यों. So आप let's understand. Generally इन द मनी के प्राइसेस जो होते हैं, जनरली इन द मनी के प्राइसेस जो होते हैं फॉर बैंक निफ्टी, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 400. ठीक है, और जैसे जैसे आप डीप इन द मनी जाओगे, as you'll be going in deep in the money, the prices will be increasing. The prices of deep in the money will be increasing, and for OTM it will be decreasing. ठीक है, इधर कम होता जाओगे. So let me directly show it to you. Okay, 1 minute. So I'll go for bank nifty and here I'll take the expiry of next week. Now right now bank nifty is at 41,298. ठीक है, 41,298 पे है. मतलब क्या, हमारा जो 300 है वो almost like it's like in the money. ठीक है, so you can see 460 rupees है price. LTP means last traded price, if you can recall. Okay, 1 minute. Okay, please notice over here. अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 41,300 जो हमारा in the money है, it is 460. 41,000 deep, we are going deep in the money, 40,600, price is 922. Deep in the money, which means the prices of option will be more. Why? I'll teach you that as well. क्यों होता है वो मैं पढ़ाऊंगा. और जैसे आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे हमारा इसका प्राइस कम होता जाएगा, इसका प्राइस जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड. if we will go for out of the money, the prices will be less. Okay, the prices that will be the option premium will be less. Okay, which one we should go for? Always we should go for in the money. So why, how does the movement happens, कैसे movement होता है, क्या होता है, उसके बारे में अभी बताता हूँ. Let's say if bank nifty, मान के चलिए, this is the point, right? So can you please tell me right now over here, I am going for selling side. Okay, मैं यहाँ पे selling के लिए जा रहा हूँ and जो लगभग it is price at 41,570. 41,570. Which strike price I should choose for put options? मुझे put options खरीदना है तो मैं कौन सा strike price choose करूँ?
41,600 I'll be going for it. Okay, that's in the money for me, so I'll be preferring 41,600. ठीक है. Now how many, when I say point means कि price कितना target हमारा 334. तो जब मैं 334 rupees over here, which I'll be often call it as a points. So here we are catching up 334 points. ठीक है. So remember this thing कि जब भी हम लोग, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं, ठीक है, तो वो जो इन द मनी में है लगभग वी गेट 50% ऑफ इट, which means here I am capturing 334, and if the option price of 41,000, let's say 600 is at 300 rupees, ये 300 रुपए पे हमारा ऑप्शन प्राइस है. So if bank nifty is moving by 334 rupees, it will be approximately giving me 160 rupees. एक 160 rupees के आसपास हमें मिलेगा, which means my target will be, if I'm buying at this point of time, my target is going to be 460. Simple words में मैं बोलूंगा, अगर मैं 100 points underlying assets में कैप्चर करता हूं, ठीक है, तो उसका 50% आई विल बी गोइंग फॉर नियरेस्ट इन द मनी, जिसको हम लोग एट द मनी भी बोलते हैं. आई विल बी गेटिंग इट ओवर हियर. सो मतलब इधर मुझे 50 मिलेगा. ठीक है. सो फॉर एन एग्जांपल लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? इधर का लाइक ऑन अंडरलाइंग एसेट मूवमेंट यू विल गेट 50% इन द नियरेस्ट इन द मनी. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके. अब इसमें नहीं समझने का क्या है भाई? 200, अगर बैंक निफ्टी में हमने वी हैव कैप्चर्ड 100 पॉइंट्स, ऑप्शंस विल गेट 50 पॉइंट्स. इफ वी हैव कैप्चर्ड 150 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट विल गेट 75 पॉइंट्स. आई विल शो यू, डू नॉट वरी. सो यू कैन सी दैट कि द एंट्री टाइम इज 9:30. ठीक है, एंट्री टाइम हमारा 9:30 है. प्राइस जो होगा 41,100. कॉल ऑप्शंस आई कैन बाय. सो लेट्स गो फॉर 41,100 कॉल ऑप्शन. ठीक है. $9:30. $9:30. It is at 241 rupees. ठीक है. बैंक निफ्टी has given me a movement of, कितना दिया है मूवमेंट? If you can see 280 rupees, which means 280 का at least 140 I should be getting it, right? 140 I should be getting it. Now over here if you see I am entering at 240 rupees. ठीक है, I am entering at 240 rupees. My target like here it is at 10:10 achieving. 10:10 को मेरा टारगेट अचीव हो रहा है. ठीक है, 240 के आसपास में एंट्री हुआ है, एंड आई हैव गॉट ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स के आसपास मूवमेंट मिला है मुझे. ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स आई हैव गॉट द मूवमेंट. ठीक है. देन इफ आई से दैट कि कंप्लीटली टिल हियर आई हैव गॉट अ मूवमेंट ऑफ 370 रुपीज. ठीक है. अब 370 में लगभग आई विल बी गेटिंग, इट इज 180 रुपीज का मूव. ठीक है. सो फ्रॉम 240 इट हैज मेड अ हाई ऑफ 390. मींस यहां पे मुझे 150 का एक मूव मिला है. ठीक है. So it's almost, it is going to be like 50% movement. Now you might be thinking, here I have entered at 240. I have achieved only like, if I see that ki somewhere around 100 points. In Bank Nifty, here the point was 280, which means I should be getting around 140 rupees, right? So that's the trick. That's the thing we need to understand over here. ठीक है. So when the market goes upside, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है, so it does not go continuously upside. ठीक है, ये ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा रेंज यहाँ पे बना, राइट? तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है. बट ऑन एन एवरेज व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज दैट कि इफ बैंक निफ्टी इज गोइंग अपसाइड, in the nearest in the money you will be getting a movement of around 40 to 50 rupees. ठीक है, 40 to 50 rupees के आसपास मूवमेंट मिलता है. ठीक है.
if we are able to capture 300 points, we will be getting around 140 to 150 points. It is as simple as that. ठीक है, understood everyone this thing? अगर मेरा stop loss यहाँ पे 113 rupees का है, then my stop loss, like if I'm buying at 300 rupees, my stop loss will go to 240 rupees. Clear है? Please type yes. For in the money, you will be like aiming for a target of 45 to 50%, or I'll tell you why we can't find out the exact price of it. ठीक है, वो बताता हूँ आपको मैं. You can sell PE as well, but stop loss वाला concept एक बार कर दो. Stop loss हम लोग क्यों रख रहे हैं? That you should be knowing by this point of time. Here the stop loss is 113 points. So again, like 50% of it I'm keeping it. But sir, percentage that are far from target, and this one is clear. But percentage that are far from target and this one is clear. I did not get the point. It's very simple that if in Bank Nifty, if you're capturing 100 points if you're buying an option, you will be getting around 40 to 50 rupees movement. Okay, you'll be getting around 40 to 50 rupees movement. If you capture 200 points, you will be getting around 80 to 100 rupees movement. Okay, that's it. Let's move ahead and understand how does these things are like like we can make like the option prices are designed. Option premium is made of two things. Okay? Option premium is made of two things. Basically the formula, option premium is equal to intrinsic value plus time. This is the most important thing. Okay, तो यहाँ पे आपका math test करूँगा. So those who are in the PTM, you know what we have done it last time. Intrinsic value plus time value. Basics maths is over here. ठीक है? Intrinsic value plus time value. Can you have you ever seen that any stock prices or anything in the stock market goes beyond zero, basically in negative? Can you lose more than what you have invested? क्या आप गवा सकते हो जितना आपने उससे ज्यादा नहीं ना गवा सकते हैं? You will never see anything in the negative. How many of you thinks you are in good in maths? Basics, addition, subtractions में कितने लोग अच्छे हैं? Simple basics like 100 minus 200, 400 minus 200. The king is over here. कैसे हो भाई? If possible, Rakesh bhai, stay till the end ना. अगर होता है तो we'll take like if you can. Movie में dialogue, okay? ठीक है. Now intrinsic value plus time value. Let's understand this thing. Intrinsic value means the exact value of options. Exact value of options. जो एक ऑप्शंस का जो भी एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसके बारे में ये होता है. ठीक है, कि क्या प्राइस होना चाहिए. ठीक है. टाइम वैल्यू मींस टाइम रिमेनिंग फॉर एक्सपायरी. टाइम रिमेनिंग फॉर एक्सपायरी. कितना टाइम बचा है उस एक्सपायरी के लिए, उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू दी जाती है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू हमें मिलती है कितना टाइम बचा हुआ है. फॉर एन एग्जांपल, इफ द टाइम लेफ्ट इज मोर, द वैल्यू विल बी मोर. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड दैट यू हैव एग्जाम ऑन 28th of November. ठीक है, तो डू यू थिंक सो दैट कि यू कैन क्लियर दैट एग्जाम? अच्छे से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो? And if you are measuring it on some value, kitna there is this much value is left. Let's say you are on 20th and you have not studied anything. अब क्या लगता है, chances क्या हैं? Chances are less or more to clear the exams or get good marks. Comparatively, इस point of time से कम हो गया. फिर let's say on 27th, the value of time will be. Are you understanding the value of time will be decreasing? Okay, the value of time will be decreasing if you are reaching near to that event thing. जब वो event होने वाला है
तो उसका टाइम वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज होते जाता है। ऑन द डे ऑफ एग्जाम हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर यू? 9 o'clock होने को है, कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम? टाइम की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? अगर आपका एग्जाम 9 o'clock को है तो उस दिन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, विच विच मीन्स दैट कि अगर जो भी हमारा एक्सपायरी होता है, लेट्स से दिस लाइक टुडे वाज एक्सपायरी, टुडे इज थर्सडे राइट, सो इट वाज अ वीकली एक्सपायरी। तो इस वीकली एक्सपायरी के दिन की टाइम की वैल्यू क्या होती? इस टाइम की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि टाइम तो बचा नहीं, मार्केट खत्म हो गया, तो इट्स ऑल गॉन, राइट? नाउ टू शो यू समथिंग एल्स, लेट मी शो यू। अभी क्या बैंक निफ्टी कितना है? 41,200 के आसपास, ठीक है। 41,200 मैं लेता हूं एक दिस मंथ 10th 10 41,200। ओके, सो यू कैन सी जो नियरेस्ट मंथ की वैल्यू है, जो अभी जो आज एक्सपायर हुआ है, उसकी वैल्यू 97। द स्ट्राइक प्राइस इज सेम हियर 511, हियर 715, हियर 881। क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट तो सेम है, व्हाट इज द डिफरेंस? कॉन्ट्रैक्ट द स्ट्राइक प्राइस इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? टाइम लेफ्ट फॉर, टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी के ऊपर जितना ज्यादा टाइम, उस ऑप्शंस की वैल्यू उतना ज्यादा। अगर मैं यही 41,200 लेट से दिसंबर में चला जाता हूं, ठीक है, और ज्यादा, दिसंबर की एक्सपायरी है भाई, बहुत ज्यादा टाइम है, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्सडे को किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सपायर होगा, मार्केट खत्म, वैल्यू खत्म। फॉर्मूला फॉर टाइम वैल्यू, वी कैन नेवर एवर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको क्या लगता है, आप किसी के टाइम की वैल्यू को लाइक यू कैन फिगर आउट? नो, वी कैन नेवर एवर फिगर आउट द वैल्यू ऑफ द टाइम। सो एज द टाइम इज पासिंग, अगर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे उस ऑप्शंस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ओके, एवरी डे द वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी डिक्रीज। ठीक है, हर दिन ऑप्शंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो नजदीक जा रहा है एक्सपायरी के। एवरी पासिंग डे द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, द प्राइसेस ऑफ ऑप्शंस विल बी इन डिक्रीजिंग, बिकॉज द टाइम लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी इज ऑल्सो डिक्रीज। ओके, what is the value of, what is the formula for intrinsic value? इस intrinsic value का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, now this is going to be interesting and I use this the simple logic। थोड़ा सा जब बड़े टारगेट्स लेने होते हैं, जब मूवमेंट्स रहते हैं, वो उसके लिए this is going to be helpful। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है, इसका फॉर्मूला है फॉर कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, टाइम वैल्यू का तो एनीवे वी कैनॉट टेक इट आउट, only we can take out if we know the intrinsic value and option premium. Call options intrinsic value is, okay, spot price. Spot price means underlying asset price. ठीक है, spot price minus strike price. Spot price minus strike price is the formula for call option. ठीक है, मतलब if bank nifty is at 41,200, let's say 50, what will be the intrinsic value of 41,200? Simple, 41,250 minus 41,200, we will get 50 rupees as intrinsic value। मतलब
ये जो हमारा रहेगा ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, एंड द रिमेनिंग फॉर एन एग्जांपल द वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन इज एट 461, ठीक है, ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो व्हाट विल बी द टाइम वैल्यू? टाइम वैल्यू क्या होगा? Only one person knows the answer. 39. It is going to be option premium is equal to intrinsic value plus time value. जहां पे हमें मालूम है कि option premium is at 461, intrinsic value is 50. How many of you are like so talented in maths? You're not able to figure out this one as well. So time value is going to be 461 minus 50. So it is going to be 411. I don't know why 39 is coming. 39 कैसे आ रहा है भाई? कौन सा कैलकुलेशन यूज कर रहे हो? Which calculation you are using? Like, are you subtracting 41 200 minus 461? तो हेलो मैथ्स के ज्ञानी लोग, बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आ गया टाइम मेरा पैसा लेने का, ठीक है। For the last batch also I had taken money. For this batch also I will be taking money. ठीक है। Now for call option, please take a screenshot or write down. Spot price minus strike price, ठीक है, is equal to call options intrinsic value. Now put options के लिए strike price minus spot price. Strike price minus spot price, which means अगर 41,250 का हमारा like spot price है, बैंक निफ्टी का प्राइस है, and if I'm taking a strike price of 41,400, what will be my intrinsic value? What will be my intrinsic value? 41,400 minus 41,250, which is going to be 150, ठीक है। And let's say this P value is 394, assuming। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम वैल्यू क्या होगा? What will be time value? अभी भी डिफरेंट आंसर। अरे मैथ्स के ज्ञानी लोग, कोई 254, 144, क्या करूं मैं? It's basics maths I'm asking you. 194, 146 also has come up. Now, see, क्या था मैंने बोला? Please listen to me. 41,400 P value is 394. ठीक है? This is what the value I have told. Then right now strike price, right now spot price is 41,250. ठीक है? तो मेरे को निकालना था 41,400 minus 41,250, which means 150 is my time value. ये मेरा टाइम वैल्यू हो गया, बस यही था ना। अब फॉर्मूला क्या है ऑप्शन प्रीमियम का? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। मेरे पास क्या है? ऑप्शंस की वैल्यू है 394, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मालूम हो गया 150 प्लस टाइम वैल्यू। नाउ आई हैव टू टेक आउट द टाइम वैल्यू, सो टाइम वैल्यू इज इक्वल टू 394 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? अब मुझे क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। देन हाउ कम आई वाज गेटिंग 244? कैसे? मैथ सही नहीं है क्या? अंडरस्टूड? कैसे आया ये? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ?
अभी भी लोग यस बोल रहे हैं, भाई गलत किया है मैंने कैलकुलेशन। इट्स गोइंग टू बी 244। ओके, वाह, यहाँ पे लिख दिया सारी चीजें हैं, एंड स्टिल यू आर सेइंग कि 144 इज द राइट। So intrinsic value which we have is 150. So if you do this calculation, we will be getting 244 as our answer. Understood? I'll write down the formula. Please make sure that you are taking the screenshot. Option premium, ठीक है, is equal to intrinsic value plus time value, ठीक है, call option intrinsic value formula, ठीक है, spot price basically underlying asset price माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। Put options intrinsic value formula, strike price minus spot price, time value formula which we do not have, but the basics maths which we use, option premium, basically option prices minus intrinsic value. Please take a screenshot. Clear till this point of time? Ready for next question? Now how many of you think you are way good in maths now? Chalo, give me a minute. Where is my phone? Give me a minute. 1 minute, just a moment. Yeah. All right. So right now again, those who will fail, okay, those who will fail, you will have to pay 100 rupees. 8940229990 ठीक है। So failing in maths will cost you this amount of money. सबको अपना फोन पे रेडी रखना, मैं भी अपना फोन ले आया हूं, ठीक है। Now tell me the intrinsic value of right now Bank Nifty is at 41298, ठीक है। तो अब मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ 41,500 का, 41,500 का आप मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू, you know the calculations everything, and this will be host and co-host. अब देखते हैं कि दूसरे का आंसर देख के कौन सही बोलता है गलत। Now tell me, Raj Sharma 202, okay, वो UPI ID है, and this is for call options. I'm asking, by the way, this is for call options, just to not make you confused. I'm asking the intrinsic value of call option. The strike price is 41,500. Okay, so 202 is your right answer. Please, 1 minute. I'm enabling the chat box. Make sure that it is to everyone. Okay. So according to the formula, we will be having 202 as our intrinsic value. Okay. If you are understood, everyone, please type yes. Please type yes to everyone. That's what you have answered. Great.
चलो अब पैसे भेजो गधो, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। 8940229990, copy this UPI ID and send it to me, then only I'll clear it out. It's not going to be what you have told 202. पहले पैसा भेजो फिर उसके बाद बात करते हैं। आई शुड लाइक बीमार हूं अब तो पैसा मिलना ही चाहिए। रॉकस्टार गणेश, दिव्या, रमेश, आदित्य, लता, गिरिधर, तुमेश्वर, हर्ष, सब ने हाँ बोला है। आज तो पैसा ही पैसा होगा। सोचो 300 प्लस पीपल, इफ एवरीवन सेंड्स मी, इट्स गोइंग टू बी 30,000 रुपीज। हो गया। I'll tell you only when I get the money. I've told you right कि पैसा सही बताओगे, गलत बताने पे पैसा देना पड़ेगा। If you have sent, please type yes. If you are going to send, please type yes. कैसे इतना ज्यादा गलत कैसे हो गया? -202 अब थोड़ी होगा। 8 डिजिट नंबर नहीं है, it's 8940. Again I'm typing my UPI ID. आज कोई पैसे ही नहीं भेज रहा। 8940229990 Send 100 rupees for not learning math. मैथ्स नहीं सीखने के चक्कर में। जल्दी भेजो भाई, और पढ़ाना है। मैसेज ही नहीं आ रहे हैं। अब सोचो तब तक पैसे भेजते भेजते ये सोचो कि गलती क्या हुई है। Only one person has told it right. कोई भेज रहा है? हो गया ना। Tell me, how many of you are sending it now? हाँ, मैंने अभी जस्ट सारी चीजें क्लियर की थी, बट स्टिल हाउ कैन यू गो रॉन्ग? अभी कैसे गलत जा सकते हो? 1 रुपया भेज रहा है, तू मेरे से ले ले भाई 1 रुपया फिर। 159, 135। Yes, Muhammad, you are right. $402। भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, लाइक इट्स डील तो थी ना हमारी। वी हैड अ डील राइट, इफ यू विल फेल इन दिस यू विल पे मी। नाउ यू आर नॉट पेइंग मी। छोड़ो, क्या ही बोलेंगे। सारी चीजें I had told you, like everything I had told you, and still क्या आंसर करूं मैं? Everything was okay. Just go back to this formula. 9 ये UPI ID है ना? This was your UPI ID. कितनी बार भेजूं? लो, please read this formula once again. फॉर्मूला पढ़ रहे हो? एटलीस्ट जो पीटीएम वाले तो सही आंसर देना चाहिए था। पिछली बार भी आपको फंसाया था मैंने इसी में। दे ऑल्सो लाइक यू टोल्ड रॉन्ग। Bhomik has sent. Yes, Saurabh, you're right. वही पैसे वैसे भेजने वाला है नहीं, सारे के सारे कंजूस हैं। अंडरलाइंग एसेट्स मींस स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। आधा घंटा और है, छोड़ो, क्या ही बोलूं आपको मैं।
क्या था फॉर्मूला एंड क्वेश्चन क्या है? 41,500, राइट? Can anything in the stock market goes in negative? Yes or no? And type it to everyone. Hey, who told yes for this? What you have seen in that key that is going in negative? Vinod? No, right? It never goes in negative. First thing is that. And I had asked you this before asking you all this question. What was the formula? What was the thing? 4198, right? C intrinsic value 41298 minus strike price 41,500, right? So at least even if you would have done the calculation, you would have got minus 202, which is a negative answer. What I got is a positive answer, which is not even relatable. Okay, some people said negative. When nothing goes in negative, which means it will be zero. Now you understood. Now you understood. ऑलरेडी फंसा था, अब पैसा भेजोगे? समझा दिया ना? सेंड इट टू मी वंस अगेन, आई विल सेंड यू द यूपीआई आईडी. चलो देखते हैं और कितने लोग भेज रहे हैं. आया ही नहीं है पैसे अभी तक. एक तो गलती करो. नाउ द most important thing is that what you need to realize, what is this 41,500 ITM or OTM? What is this 41,500 ITM or OTM? What is this 41,500 ITM or OTM? What is this 41,400 ITM or OTM for call options? Make sure that it is to everyone. For call option, what is it? Which means OTM will have intrinsic value or not? Which means OTM, 1 minute. Now let me know intrinsic value of 41,100 put options. फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है, 41,100 का intrinsic value, let me know. 41,298 is the price. Hey, what is the intrinsic value? हे भगवान, कैसे लोग हो यार? अब जीरो बता रहे हो. जब जीरो बताना था तो जीरो बताया नहीं. What is the intrinsic value of put option 41,100 strike price? Seriously, you should go and learn basics maths now. अभी just मैंने explain किया. I just have explained each and everything, but still people are telling me 0, 198, minus 198. Ayush, can anything go in negative in stock market? Plus 298. What to expect you? Basics math सब मुझे पढ़ाना पड़ेगा. 41 P intrinsic value 41,100 minus 41,298, right, is equal to minus 198. Can anything goes in negative? No, right? So intrinsic value will be 198 or 0. पूरा पैसा बर्बाद कर लियो तुमने. कोई फायदा नहीं है. मैथ सीखो पहले. सेट 0. समझ में आया? Everyone understood or still confused? If you are not able to put the same thing in the formula, how? I do not know what to tell you. Everything is right in front of you. Still you are telling me the wrong answer. What is the confusion? Abhi yahan to there is no confusion, right?
strike price, spot price, everything is there, nothing goes in negative. If it is in negative, that means it is zero. If it is in negative, it 41298 is the spot price, basically bank nifty price. यार क्या समझाऊं मैं यहाँ पे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है. Yes, Aditya, that was an exception case. Tell me, what should I tell you over here? Simple thing is that if we want to know this, like intrinsic value, the exact value of option, what we do, okay, what we do is that we, like for put options, we set strike price minus underlying asset price. So strike price is 41,100 minus 41298. If we do, we are getting minus 198. Intrinsic value cannot go in negative. I just told you, which means it is going to be zero. The conclusion is that OTM will never have intrinsic value. Understood this point of time? OTM will not be having any kind of intrinsic value. Understood this one? Now I don't need to drag it so much. So it's very simple for you. If you have understood, good enough. If I cannot break it into like this much that to go down and make you understand the maths. Formula was there, gave you the hint, everything. Like once I gave you the answer also, again you are making the mistakes. Understood or not? If you have understood, that's fine. Okay. And now tell me that one thing is that, please do understand one thing is that OTM will not have an intrinsic value, which means all these values are what? What is the value? This is 410, this is 359, this is 265. अब ये सारी चीजें क्या है? OTM का तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा नहीं, तो ये सारी वैल्यू क्या है? व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है रॉयल, पहले तो जो नाम है आपका वही नाम से आओ. अरे यार, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या है ये समझ में नहीं दिखेगा ही नहीं क्या? स्पॉट प्राइस इज बेसिकली अंडरलाइंग एसेट प्राइस. इफ देर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर ओटीएम, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है ओटीएम का, तो ये कौन सी वैल्यू है? इट्स टाइम वैल्यू. सो बेसिकली सी व्हाट आई एम लाइक, मैं ना अपना सर मत्था ना दीवार पे मार रहा हूं, ठीक है? व्हाई आई विल टेल यू, I'll tell you directly because I wanted this answer from your end, but it is not coming and it is going to be time taking. So simple thing is that these are OTM do not have intrinsic value. OTM का intrinsic value नहीं होता है, ठीक है? So the remaining is time value. जो remaining होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ time value होते हैं, ठीक है? Which means expiry के दिन time value क्या हो जाएगा? Expiry के दिन time value क्या होगा? What will be happening to time value on expiry? On the day of expiry, it will be going to zero. So what will be the happening the values of this OTM? So OTM will become zero on the day of expiry. सीधी सी बात यही थी, मैं ये चाहता था आंसर आप दो, ठीक है? But you failed in that. OTM will have zero, okay? उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. बेसिकली इट गोज टू 0.05 और 0.01, ये इतना तक जाता है, ठीक है? उसको हम लोग जीरो ही बोलते हैं. एंड ITM विल बी ओनली हैविंग, एंड इन द मनी वैल्यू विल बी ओनली हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू. सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है. आज क्या है? थर्सडे है, ओके? टुडे इज थर्सडे. सो 3rd November if I go and see, you can see that all these are out of the money. You can see all these have gone to zero. सारे के सारे ये सारे zero हो गए, right? And now if you calculate the intrinsic value,
अगर आप कैलकुलेट करोगे 40,800 का इंट्रिंसिक वैल्यू, 40,800, what is the price? 41,296, right? So you will be getting 496, which is exactly intrinsic value. Sub में somewhere you will be seeing a difference of 100 rupees, 97, 197, 297, like this you will be seeing it. Understood? So on the day of expiry, OTM will be zero. Out of the money जो होंगे वो zero हो जाएंगे, because time left is zero. There is no intrinsic value for that, and for in the money only intrinsic value will be left. समझ में आया या नहीं? अब यहां तक समझ में नहीं आया? I took just like maybe 20 minutes just to make you understand this. ठीक है? We should never trade in OTM because OTM में मूवमेंट्स नहीं मिलती. अगर बैंक निफ्टी आपको 100 रुपीज का मूवमेंट दे रहा है तो OTM में बहुत कम मूवमेंट मिलेगा. Now let's understand the last topic of the today's session is difference between buyers and sellers. Buyers and sellers. So time value is anyway decreasing. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे टाइम की वैल्यू डिक्रीज होगी. इफ मार्केट गोज इन साइडवेज व्हाट विल हैपन? साइडवेज का मतलब क्या है? टाइम वेस्ट हो रहा है. तो व्हाट विल हैपन टू ऑप्शन वैल्यू? ऑप्शंस की वैल्यू का क्या होगा? मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ये पूरा इसी तरीके से मूव हो रहा है, तो इट इज बेसिकली गोइंग नोवेयर एल्स. ये इधर जा भी नहीं रहा है, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? टाइम वेस्ट हो रहा है. एंड इफ टाइम इज गेटिंग वेस्टेड दैट मींस टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इफ द लाइक एंड व्हिच वी कॉल इट हैज टाइम डिके और थीटा डिके भी बोलते हैं. ठीक है? So one thing is that in sideways market, the value of time, basically the value of option will be decreasing. क्यों decrease होगा? First thing is that it is not going anywhere. ये किधर भी जा नहीं रहा है, ये बस time waste कर रहा है. तो intrinsic value will remain the same, but the time is getting wasted, so time value will be decreasing, right? So option value will be going downside. So for an example, let me show it to you. आप देखोगे, so over here market like आप देखो like exactly at 9:30 and like 1 o'clock. ठीक है? The same level, right? ये सारे same level पे है. So you can see 9:30 185. ठीक है? 9:30 पे इसकी प्राइस जो थी it was 185. At 1 o'clock it is 108. ठीक है? Again for the next week expiry 514. ठीक है? 514 था इसका प्राइस. 1 बजे के आसपास इसका प्राइस हो गया somewhere around 501. Why? It went up, came down. At the end ये जहां से स्टार्ट हुआ उधर ही आ गया. At the end it came to the point where it had started, right? So obviously it has just wasted the time, so the time value is decreasing. ठीक है? Now whom it is going to benefit? If I am selling options, let's say call options, ठीक है? The prices are going downside, I will be getting benefited. Let's just understand in a way. Market is going downside, ठीक है? And it has gone in range. So from let's say 39,000 it has gone to 38,200, and then after that it went in range. Put options, the value let's say from 300 it went up to 400, and then it has gone in range. Like before going in the range the value is there. ये 300 से 400 आया, range की पहले की वैल्यू है. Call options भी ये 400 से it went up to 300. Market is in the range. ठीक है? ये range के पहले की वैल्यू है. Now tell me if I will buy put option or if I will buy call option, which one is beneficial? कौन सा मेरे लिए beneficial होगा? अभी भी put बोल रहे हो? If I'll buy at 300 it will go to 400.
market is going in range, it will decrease to 390. Okay, so if I'm buying at 300, the value is 390. So if I'm selling this call options at 400, the value has gone to 300. After the range, the value is 290. Which one is beneficial? Buying put option or selling call option? कौन सा beneficial है? C या फिर P? Okay. So what do you think, this sideways market जो decrease in the time value किसका friend है? Which, like, this decrease in the time value, the theta decay or the time decay, it is favoring whom? Buyers or sellers? It is favoring whom? Buyers or sellers? It is favoring sellers. Okay. See, in a stock market, we will be seeing that there will be like trending market, sideways market. Okay. So if market is going upside, we can make, like, buyers will also make money, sellers will also make money. If it goes in sideways, sellers will make money and buyers will not be able to make money. Okay. So if we see that buyers have an advantage, like buyers and sellers, okay, so option sellers will have an advantage of time decay. ठीक है, टाइम डिके का इनका एक एडवांटेज होता है जो बायर्स के पास नहीं है. सो लेट्स से राइट नाउ इफ आई एम सेलिंग कॉल ऑप्शन, अगर मैं ये कॉल ऑप्शन जो है बेच देता हूं 41,000 लेट्स से 300 का, 41,300 का कॉल ऑप्शन आई विल सेल इट आउट. ठीक है, which is at 460 rupees. And on 10th of November, okay, if market is closing, let's say at 41,200, okay, let's say someone has purchased this call options. ठीक है, किसी ने ये buy किया call option and किसी ने sell किया call option. Who will be getting benefited? किसको benefit मिलेगा इसका? जो बेचा है उसको या फिर जो खरीदा है उसे? The one who have sold will be getting the benefit of the time decay, because see, if you see over here, all these are time value. ठीक है, यहाँ पे क्यों लोग ट्रेड कर रहे? 89, all these people who have taken the position. So these are nothing but the time value which will be decreasing. So time decay benefits the sellers. Time decay जो है वो benefit करेगा sellers को. ठीक है, remember this point of time. Second thing is that if I am buying call option, okay, if I'm buying call option, let's say at 300 rupees, where the that point of time bank nifty was at 41,000. Okay, let's say on the same day it went up to 42,000. It can go up anywhere, right? So is there any limit on making profit? कोई लिमिट है हमारे प्रॉफिट पे? 300 पे अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो कोई लिमिट है हमारे प्रॉफिट पे? There is no limit. It's unlimited. It can go up to 3,000 as well, right? It can go up to 3,000 rupees as well. The losses, maximum loss which I'll be having it is that the whole capital which I have invested, right? जो हमने पूरा एक capital invest किया है वो हमारा जा सकता है. If I have invested, let's say 7,500 rupees, again, if we are using not using the stop loss and all, we are not considering that, but again, ठीक है, depends on the ratio, it depends on the premium which you are choosing. ठीक है, so the losses will be limited or unlimited. यहाँ पे losses क्या होंगे? Limited होंगे या unlimited होंगे? It will be limited. So basically for option buyers, limited loss and unlimited profit. Understood this thing? क्योंकि अपन जब खरीदते हैं वो जाने को कहीं पे भी जा सकता है. If I am buying something, the value can go anywhere, and if it has to go down, it will go maximum to zero itself. Okay. Now exactly the same thing over here for options. If I am selling options, the maximum profit which I can get is over here. अगर मैं सेल कर रहा हूं ऑप्शंस तो मुझे कितना प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा? Maximum profit is the 300, which means limited profit. The fixed profit is going to be 300 rupees per lot. Okay, right?
and losses can be unlimited. क्योंकि अगर मैं बेच रहा हूं, अगर मैंने एग्जिट नहीं किया, अगेन कंसीडरिंग नॉट एग्जिटिंग एट स्टॉप लॉस, it is going to be unlimited, but the profit is always going to be fixed. Okay, remember this thing. Understood this point of time? Clear है यहां तक सबको? If it is clear, please type yes. Only 30 people are clear. See, sell may and buy means go up, sell means go down. If I am buying C, it means it will be like we want the market to go up. If I'm selling C, I want the market to go downside. See, if I am buying something at 300, the value it can go anywhere, right? तो ये किधर भी जा सकता है, लेकिन नीचे आने को आएगा तो ये 0 पे आएगा. So option buyers have unlimited profit, and options buyers will be having limited loss. Basically, whatever you have invested the capital, घर का पेपर डाल दियो, अगर नहीं एग्जिट कर रहे हो तो पूरा का पूरा पैसा जाएगा. ठीक है, ठीक है. Second thing is that let's say if you are selling at 300 rupees, maximum it can go down is 0. Like basically when you sell, you want the prices to go downside, so you will be having a fixed profit of 300. But if it goes up, again you can have an unlimited loss as well. Okay, Sankesh, do not worry, you have to watch the recordings, because if you're learning something for the new for the first time, कुछ समझ नहीं आया बाई कैसे करना है, जब ट्रेडिंग करोगे, जब when you will implement it practically, you will understand that point of time. Do not worry. Now one thing we need to understand, last part is, okay, if I am buying call options, see, either like minimum amount to buy, by minimum amount कुछ है ही नहीं. If you are buying this at 97 rupees, you just have to pay the premium price. अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ let's say 5 रुपए पे, I just have to pay 125 rupees. Right? So whatever the price it is at, if I am like, I just have to pay the same price. जो भी premium है, ये मेरा पूरा capital है. अगर let's for just understand 41,300 call option. Let's say I have taken this call options. Okay, why options are considered as risky? Because of the emotions which is involved. Someone would have thought that from here, like from 200 market is going to go up, say, but it came down to 120. Huge loss, like almost like 40% का loss हो गया. People do exit the trade, then again it goes up in the profit. अब लगता है यार ये तो profit में चला गया, right? Next time, what will they will hold this. The same situation will happen. They will not exit over here, and at the end the value will be 0. So they will be losing out everything. So it is very important for us, whatever the stop loss we are fixing it up, we have to exit at that level. If not, on the day of expiry, you will wipe out your capital as well. Okay. Now, when we buy options, we just have to pay the limited amount of money. But when we sell options, we have to pay a huge amount of money. Let it be if it is for intraday or it is for like carrying it. Why do we have to pay a huge amount of money? The simple reason I'll give you. Let's say that there is a sudden move in the market. बहुत बड़ी move आ जाती है market में. ठीक है? So from 460, it can, let's say if it goes to let's say 3,460, यहाँ तक चला गया. Which means approximately there is a huge loss of 3,000 into 25. If you do, you will get around 75,000 rupees loss, right? अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे किया होता 11,000 का, तो दिन तो कुछ नहीं था. Let's say if I am buying by just paying the premium price 11,000 ka, which means ki if a movement of 400, like from here, if it goes up to by 460, I'll be losing out. But in a case, if there is a huge move in the market by like 500 points or 1,000 points, what will happen? You will obviously wipe out the capital. Sometimes the system will not be that great. They are not exiting your shares. Okay, बहुत fast move, because in options we are very happy. We'll be having a very quick movements. You can imagine from 151, it went up to like almost like half of it. यहाँ से 105 से like 40% movement in just 5 minutes, and 60% like 40% loss in just 5 minutes, right?
So to avoid these things, like if you have lost money and if your broker calls you up and says you ki boss, this is the scene, you have lost, आपने इतना गंवा दिया है, now it is in negative, you have to pay. Will you pay to the broker? क्या आप पे करोगे ब्रोकर को? बताओ, अगर आपका ब्रोकर किसी दिन जीरो का आता है and there is a loss of 10,000 rupees, will you pay? No, right? चलो, किसी का लॉस है 10,000, किसी का लॉस हो गया 10 लाख, तो वो पहले ही बोलेगा भाई यहाँ घर बेच के बैठे हुए हैं, ये तुमको 10 लाख रुपए और चाहिए. Nobody will pay, right? And simpler way to avoid all these things, this has been fixed by SEBI, by the way. Okay, they will be charging a huge amount of money in a case if there is in a certain events, if there is a huge movement, okay, to avoid all these nonsense. Okay, there is a way that we can sell the options with by just 22,000 rupees as well. By just 22,000 rupees we can sell one lot, which I'll be teaching you in next class, so you don't have to worry on that. Okay, understood? Why do brokers charge a huge amount of money for option selling? Because if there is any sudden movement, okay, who will compensate with the losses? कौन कॉम्पेंसेट करेगा? सर थर्सडे को लोग ट्रेड क्यों नहीं करते ऑप्शंस मोस्टली, जबकि सबसे ज्यादा सस्ता उसी दिन होता है, सबसे ज्यादा लोग उसी दिन ट्रेड करते हैं नालायक. अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ऑप्शंस? सबको समझ में आ गया? If it is clear, please type yes. That's all, like from basics till like whatever you need to know about options. I might be taking a class on the live trade. That point of time, I'll make you understand. I'll teach you कि how do we trade in options also. उस दिन मैं आपको लाइव में दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो. सर बस एक बार, हाँ रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो मजा आएगा. अरे यार रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं पूरा सेशन. यस वी हैव क्लास. कल क्या है? लॉस अनलिमिटेड कैसे होगा? हो सकता है, करके देखो फिर मालूम पड़ेगा साहिल अनलिमिटेड कैसे होता है. एक काम करो, सिंपल थिंग इज दैट आई विल टेल यू. न्यू स्टॉक इज द ऐप नेम. अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, रुको. न्यू स्टॉक, ठीक है, ये एक ऐप है वेर यू कैन डू द पेपर ट्रेडिंग ऑफ ऑप्शंस. डू इट, कर लो, ठीक है. अब एक ही बार बताया हूं, बार बार मत पूछना मेरे से कैसे ऑपरेट करते हैं एंड ऑल. डू नॉट आस्क मी ऑल दीज थिंग्स. आई डू नॉट यूज पेपर ट्रेडिंग ऐप. तो ये खुद से आप कर लेना, ठीक है. So there is someone who teaches in PTM, ठीक है, जो PTM में पढ़ाते हैं. So he is a great, like he's a good, like very good in options trading. And those who are in PTM, those who will be joining PTM, he will be taking a lot of classes for PTM, and he will be the one who will be helping you out a lot of things for option trading as well. So Rakesh bhai, if you want to tell something, you can tell them. If you're here or if you have already. Yes. Okay. So I'll give you the code of the class. Give me a minute. Okay. So if there is any, hello. If there is anything, do let me know on that. Hello everyone, here myself Rakesh. That you are going to have a like great journey in options. Okay. So whatever like Roshan sir is teaching you now, that is basic things. Okay. That it is not that so much important. I can say that if you don't know, you can't do options. Okay, you can do options without knowing the Greeks and all, but you should know the basic things. Okay, so that is the main reason that Roshan sir is like teaching you the basic things, like all the Greeks, theta, gamma, delta. Okay, अगर आपको इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये सिर्फ आपको जानना है कि ये होता क्या ऑप्शंस में.
जस्ट है, टू अगर आपको कंफर्म भाई, ये आपका स्मैट का है, ये पीटीएम भी है, लेकिन ये स्मैट में, तो जिसमें स्मैट में हम लोग ग्रीक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना, अभी जब को आप अगर नए हो तो आपको पहला बंदा क्या करना है ना, आपको इक्विटी ट्राई करना मार्केट में। इक्विटी आप इसलिए ट्राई करना चाहिए जो आपको पेशेंस चाहिए ट्रेड करने के लिए, टू ट्रेड विथ पेशेंस एंड फॉर टू सेट अप a target and a sell. First you have to practice in equity market. ओके, तो जब इक्विटी में आप ट्राई करो तब आपको हिम्मत मिलेगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। इक्विटी में अगर अच्छा खासा आप कमा रहे हो, आपका अच्छा जा रहा है, तो आप ऑप्शन में घुसिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप इक्विटी आपने ट्राई नहीं किया कभी भी, मतलब इक्विटी में आपको पेशेंस नहीं है। ऑप्शन में बहुत पेशेंस चाहिए होल्ड करने के लिए। कई बार ऑप्शन मोमेंटम ऐसा आता है ना कि आपको एक दो पॉइंट विद इन 3 सेकंड में ऊपर दिलाता है। जैसे कि आज मॉर्निंग में मोमेंटम आया था, जो स्ट्राइक प्राइस 30 पे था, वो विद इन 5 मिनट्स में 150 हो गया था वो। तो ऐसा होता है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में क्या है ना, परफेक्ट एंट्री एग्जिट मैटर करता है। तो आने वाले क्लास में आपको सब सिखाया जाएगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए बेटर होगा। तो ऑप्शन बायर्स, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सब आगे आगे आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ओके, डन। ऑलराइट भाई, सो ही इज वन ऑफ द व्हाट ही टोल्ड इन द लास्ट, जो भी इन्होंने लास्ट में बोला वो पर्टिकुलर पीटीएम के लिए था, जो पीटीएम में रहेंगे, ठीक है, बिकॉज़ ही विल बी टेकिंग क्लासेस इन पीटीएम। ठीक है, फॉर ऑप्शंस लाइक व्हाटएवर द जो भी स्मार्ट में है, ऑप्शंस में आपको जो भी पढ़ाया गया इन द सेम वे यू कैन टेक अप द ट्रेड। आपको जो भी पढ़ाया गया है ये में इन द बेसिक्स प्राइस सेक्शन, दैट विल बी वर्किंग गुड फॉर यू, ठीक है। या लेट मी नो अगर कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। या एचके यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। इक्विटी मार्केट में ट्रेड करे क्या सर? मैंने तो कब का बोल दिया भाई, मिल रहा है, कोड मिल रहा है। Yes, same candle patterns you have to follow over there. Okay. I guess you don't have anything apart from asking the सर आप ट्रेडिंग कराओ ना एक लाइव। करते हैं मंडे या ट्यूसडे को रखेंगे। कल कौन सा स्टॉक देखें? देख लो अपनी मर्जी से, कोई भी स्टॉक से यार, कब तक मेरे स्टॉक से पीछे भागोगे? वैसे आयशा मोटर्स एक ध्यान में डाल सकते हो, आई हैव नॉट सीन आल्सो। ध्यान में ही नहीं रहा भाई, क्या देखेगा। वॉच आउट पीएल, पीएल देखो। आयशा मोटर, पीएल एंड आयशा मोटर्स, दैट्स इट। एंड कोई नहीं भाई। PL, MGL, and MGL, PL, MGL, and which one was the Aisha Motors? You can watch 3 stocks. I'll give you the code. Okay. So those who are in PTM, we will be having classes on options like completely in depth. अभी start करेंगे. Okay. I hope the basics are also clear now. Code for the class is options are like that. One minute. Go. Yeah. Give me a minute. The video is stuck now. Yeah. Options are like that partner of your life जो क्या बोलूं मैं,
if you understood her, your life is better. अब इसको सीरियसली नहीं मिला लेना, ठीक है? So that's all from my end, guys. Bye. Good night. Take care. We'll see you tomorrow. The candlesticks pattern, the beginning, as in it will be the same for options as well. बता दिया टीजे, पेपर ट्रेडिंग के लिए न्यू स्टॉक ऐप यूज करना है आपको. कल के लिए स्टॉक्स भी बता दिया. मैं यहाँ गधा नहीं हूँ जो बार बार एक ही चीज बार बार बताऊंगा. कभी स्टॉक्स नेम तो कभी ऐप नेम. सुना करो ना ढंग से पहले. The pattern you said in the beginning of the lecture. That remaining patterns I might be teaching you tomorrow. PTM अभी भी ओपन है, रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा. याद दिलाते तो मैं पिछली बार. अच्छा एक और कोड दे ही देता ना, मेरी मर्जी, मैं कितने भी कोड दूं. Last time I had given related to maths only. The other code is that learn maths and pay my 100 rupees on 8940229990 ठीक है? मैथ सीख के आओ आज, अच्छे से मैथ सिखाया है. एंड पे माई 100 rupees. ठीक है? थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग रोहन, नॉट रोहन हु हैड. इन्वेस्टमेंट के बारे में कब बताओगे? इन्वेस्टमेंट वी आर कवरिंग फंडामेंटल आंसर्स. नेक्स्ट क्लास विल बी रिलेटेड टू ऑप्शंस इटसेल्फ. साहिल, चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस. वी हैड अ लॉन्ग सेशन फॉर 2 hours. ठीक है? देयर इज नो कोड फॉर पीटीएम. इतना पैसे का क्या करोगे? कवर में लेके जाऊंगा. आओगे कवर में लेने? स्विंग ट्रेड विल बी कवरिंग सून. चलो बाय.